कर दो। इतना टाइम तुम कहाँ थे? हाँ, ट्रैफिक जाम था क्या? तो फिर जाम था तो ब्रेड कहाँ था? जाम के साथ ब्रेड होना चाहिए ना। काय बोलतोय रे तिच्याशी? हे मोठं कर ना. मेरे तरफ देखो. कल जो लिया था वो तुमने रिवाइज किया है क्या? एनी डाउट इन दैट? एनी क्वेश्चन इन दैट? होना भी नहीं चाहिए. All right. Now, I take your attention to the first question herein. Find a simple interest on rupees 1000 at 6% per annum for 5 months. अभी तुमको क्या निकालना है? निकालना क्या है वो समझना चाहिए क्या है? जो बोला है वो निकालने का, बलदस काहीतरी निकालने का नहीं. अभी what is given? Tell me what is 1000? Principal amount. So principal is equal to 1000. By the way, tell me R is equal to what? 6% per annum. N is equal to what? But 5 months means what? Very nice. 5 by 12 means what? 0.41. हाँ, मैंने तुमको बोला है कि 5 डिजिट तक कैलकुलेशन करना है मिनिमम. And then my question is, what is the formula for simple interest? It is P into N into R and that over. So that is equal to what? 1000 multiplied by 6 multiplied by 0.41666. That divided by 100. अभी ये कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे? क्योंकि कैलकुलेटर का यूज समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. How will you do that? It will be like 1000 multiplied by 6 multiplied by 0.41666 and that divided by 100. जो ऊपर ऊपर है वो इंटू इंटू है और जो नीचे नीचे है वो डिवाइडेड बाय है. करो बाद में. तो फिर तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा. हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली ₹25 आया क्या? 24.99 ना समथिंग. तो दैट इज 25. समझा क्या? तो इंटरेस्ट इज 25. अगर उन्होंने पूछा कि देन ए इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या करेंगे? तो फिर इट विल बी बेसिक वैल्यू इज 1000 प्लस 25 रुपीज का इंटरेस्ट. देन ए वुड बी 1025. अभी ये ए और इंटरेस्ट का फर्क समझा क्या तुमको? Interest is interest to be paid on given principal, but principal plus that interest is future value. समझा ना? वो टोटल अमाउंट जितना पे करने का है वो कड़ा. अभी सेकंड क्वेश्चन के तरफ देखो. What sum of money put? Tell me, what do you put? What do you put? Money you put. Where do you put? In the bank. How much money do you put? How much money do you put? That is not given the second question में. अभी for how many years? तो what is 2? सीखो, धीरे धीरे जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है. What is 2? What is R? And it amounted to 1276. Amounted to मतलब टारगेट वैल्यू है ना. अमाउंट टू का मतलब होता है टारगेट वैल्यू. टारगेट वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू दिया है 1276. एंड देन व्हाट इज टू बी फाउंड? प्रेजेंट वैल्यू. समझा ना? तो व्हाट इज गिवन? सिंपल इंटरेस्ट विल दैट विल अमाउंट टू का मतलब क्या? व्हाट इज 1 to this? What is 1 to
276A. So we had to use the formula for A now. So tell me A is equal to what? P into 1 plus N into R and that over. So हमें पता है 1276 is A. But हमें नहीं पता है P. Then this is 1 plus. This is 2 into 8 and that over. मैं अभी मेरे को बोलो कि 2 into 8 कितना होता है? 16 divided by 100 कितना होता है? हाँ 0.16 plus 1 कितना होता है? And therefore 1276 is equal to P into 1.16. समझा क्या तुमको? अभी ये 1.16 को नीचे लाना पड़ेगा. Therefore 1276 that divided by 1.16 is the value of P. 1100 आया क्या? That is how you find. अभी मेरे को बोलो कि जिनका पहले मैथ्स नहीं था 11-12 में और जिनका मैथ्स अच्छा नहीं था 10th स्टैंडर्ड तक, ये डिफिकल्ट है क्या? तुम्हारे साथ कैलकुलेटर है अभी. दैट इज मेकिंग बिग डिफरेंस. एंड ये क्या है? ये बिजनेस मैथमेटिक्स है. यहाँ तुम्हें कोई सर्कल बिर्कल नहीं निकालना है. हाँ, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर वो एग्जामिनर सर्कल निकालेगा क्या है तुम्हारे पेपर पर? हो गया क्या बड़ा? नो, कहना हो गया. हो गया क्या? तो फिर अभी ये तीसरे क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ देखो. इन हाउ मेनी ईयर्स? दैट इज अ गुड क्वेश्चन. लुक एट मी. इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब व्हाट इज टू बी फाउंड? दिस अमाउंट ऑफ हाउ मच? Amount of how much? 35,000 will amount to 87,500. What is 87,500? Very nice. And what is 10 R? And therefore what happens is that we again use the formula A is equal to P into bracket 1 plus N into R and that over 100. तो A कितना दिया है? 87,500. P कितना दिया है? 35,000. दैट इंटू ब्रैकेट 1 प्लस N नहीं दिया है, R दिया है 10, दैट ओवर 100. अभी ये कैलकुलेशन का सीक्वेंस देखो क्या है. What I will do is I will bring this 35,000 down first of all. And therefore 87,500 and that divided by, बोलो 35,000. ये समझा ना तुमको? एक बात समझने की कोशिश करो. अगर तुम्हारे पास 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 है और मेरे को 4 को शिफ्ट करना है, तो फिर वो माइनस करना पड़ेगा. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल 3 इज इक्वल टू वॉट? 7 माइनस 4. तो वो प्लस है तो माइनस होगा. बट इफ यू हैव 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 और फिर मेरे को 4 को शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4. समझा ना? मल्टीप्लिकेशन है तो वो नीचे जाता है और एडिशन है तो वो माइनस होता है. हे एवढं कळतं ना तुमको? हाँ. अभी इफ दैट इज ट्रू दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वॉट 10 इंटू एन एंड दैट ओवर. अभी कैलकुलेटर पर करो ये कितना होता है?
2 point is equal to 1 plus 10 into n over 100. अभी ये 1 प्लस है कि नहीं, तो वो इधर आएगा तो 1 माइनस होगा. And therefore 2.5 minus 1 is 10 into n over, तो 1.5 into 100. अभी ये नीचे है कि नहीं, तो वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आएगा. So that divided by 10 is the value of n. So find out how much is n. That n is 15 years. I promised you that we will start with a basic level, and then we will take up the problems of the toughest level. Those can come in the paper. समझा क्या? मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या हो सकती है, वहां तक हमें पहुंचना है, लेकिन शुरू वहां से नहीं करेंगे. शुरू ऐसा करेंगे कि तुमको कुछ नहीं आता है. समझा क्या? हाँ. व्हाट इज 35,000? P, present value. What is that? Whatever 87,500 A. बराबर ना? तो 87,000 is equal to 35,000 into 1 plus n निकालना है. And R is what? 10. नहीं वो दिया है ना 10. So it will be 10n over 100. तो पहले मैंने क्या किया, ये 35,000 को नीचे किया. So फिर 87,500 over 35,000 कितना आता है? 2.5 आता है. तुम करो कैलकुलेटर पर. 87,500 अपॉन 35,000 कैलकुलेटर पर करो. हाँ, तो 2.5 आया. फिर मैंने ये जो 1 इधर था उसको इधर खींचा, तो फिर वो हो गया 2.5 माइनस 1. हाँ, म्हणजे 1.5 इज इक्वल टू 10 इंटू n ओवर 100. तो ये 100 जाता है ऊपर और 10 विल बी कमिंग डाउन. वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ना उसको, वो हो गया. So this is how you get an answer of 15 years. समझा क्या? Start with the basics, end up with the toughest. That will be our policy. हो गया क्या भाई? और इसके बीच में हम मजा भी तो करेंगे ना. We'll enjoy the lives, enjoy the lecture. Lecture will never be in the serious and should not be in the serious mood. It should be in the lighter mood but focused on the studies. समझा? Is that clear? Problem is clear? हर किसी को समझा? Is that clear? Very nice. तो फिर ये फोर्थ सम के लिए अभी तुम मेरे तरफ देखो. Aishwarya did what? Borrowed. Borrowed what? Borrowed what? 1750. So what is 1750? क्योंकि वो लोन है तो P है. समझा ना? So P is given to be 1750 for how many months? So what is 5 months? तो n is equal to 5 months. That means 5 divided by 12. But ये 5 divided by 12 कितना था? कैलकुलेटर पर करो. 0.41666 आता है क्या? R निकालना है हमें, तो R is what? That is what is to be found. अभी मेरे को बोलो, she paid 43.75 as an interest. So what is 43.75? That is not A, that is interest, and therefore interest is equal to 43.75. अभी फॉर्मूला किसका यूज करेंगे? A का यूज करेंगे या I का यूज करेंगे? And therefore this interest is equal to P into N into R over 100. Therefore 43.75 is equal to 1750 into 0.41666, that into R and that over 100. अभी मैं क्या करूँ बोलो मेरे को? ये नीचे वाला 100 ऊपर जाएगा और ऊपर वाले वो जो दो टर्म्स है 1750 into 0.41666 वो नीचे आएगा. And therefore 43.75 that multiplied by 100 that divided by 1750 multiplied by 0.41666,
that would be the value of R. हाँ ऐका कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे बोलो मेरे को. How would you do it on the calculator? 43.75 into 100 divided by 1750 and divide by 0.41666. जो नीचे है वो डिवाइड होता है ना, और जो ऊपर है वो इंटू होता है. समझा क्या? So today you have to understand what is into, and then after few years you will have chintu pintu. समझा ना? Today into. जो ऊपर होता है वो नीचे आता है, जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है. कौन ऊपर होता है? ऊपर कौन होता है? न्यूमरेटर. नीचे कौन होता है? डिनोमिनेटर. हो गया. हमें तो आंसर 6% पर मंथ. बराबर ना? वो नेवर इट इज पर मंथ, इट इज ऑलवेज पर एनम. समझा? इज इट क्लियर? आया आंसर सबका? वेरी गुड. तो फिर लुक एट द फिफ्थ सम. अभी दिस इज अ गुड सम, जस्ट हैव अ लुक एट इट, डोंट राइट. सम ऑफ मनी, sum of money, चालू दे. Sum of money amounts to 10,400 in 6 years. क्या मतलब है? Amounts to मतलब क्या? A. And therefore the one equation that you have is 10,400. This is equal to P पता नहीं है, 1 plus N पता है 6. But R we don't know, so R will be remaining as it is, that divided by 100. And the same money amounts to 11,200 in how many years? So what will you get? 11,200, this is equal to P into bracket 1 plus 8 into R and that over 100. अभी ऐसे जो दो इक्वेशन तुम्हें मिलते हैं, whenever you happen to get the two equations here, in this entire chapter, whenever you get the two equations like these, what I will do is I will call this equation 1 and this equation 2. I will consider say equation 1 over equation 2. ऐसा करने का रीजन ये है कि PP कट होगा. PP कट होगा तो you will be left with only R in that. तो जब दो इक्वेशंस यहाँ लिखो, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लग सकता है, so when we had two equations, when we get up with two equations, when we get the two equations, I take the ratio of the two equations, that means division of the two equations. Equation 1 divided by equation 2 will give me 10,400 divided by 11,200. This is equal to this P into bracket 1 plus 6R over 100. And that divided by P into bracket below 1 plus 8R over 100.
advantage is that PP will be cut. समझा क्या तुमको? This P will be cut. अभी तुम मेरे को बोलो 11,200 ये रेशो कितना आता है? ये रेशो कितना आता है बोलो? 0 पॉइंट किंवा असं करा, ये दो zeros कट हो सकते हैं कि नहीं? And then this denominator will be shifted here to the numerator. And this यहाँ का denominator will be shifted to the numerator out here. समझा ना? तो फिर क्या होगा बोलो मेरे को? 104 इंटू 1 प्लस 8 इंटू आर ओवर 100. लिखो मत, पहले समझो. हम एक बात अभी इसके आगे पूरे ऑलमोस्ट वॉट एवर पीरियड यू हैव, हम एक बात फॉलो करेंगे. यू विल नेवर राइट विथ मी, बिकॉज वेन एवर यू आर राइटिंग विथ मी दैट मीन्स यू आर जस्ट कॉपिंग, बिकॉज तुमको कुछ नहीं आता है. वॉट यू वुड डू इज वॉच, give answers to my short questions, and when the problem is over do it on your own without copying from the screen. ये जो स्कूल में हमें हैबिट लगी है ना कि बोर्ड पे से नोटबुक में कॉपी करो, वो हमें नहीं करना है. लर्न इन द क्लास डायरेक्टली फॉर द एग्जाम. तो ये प्रॉब्लम पहले समझो, नो वरीज, बट देन ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन विदाउट कॉपिंग फ्रॉम द स्क्रीन. समझा क्या तुमको? तो अभी मेरे को बोलो कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट. गिव आंसर्स टू माय क्वेश्चंस. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ये 112 ऊपर आएगा, दैट इंटू 1 प्लस 6r ओवर 100. अभी आई कैन ओपन द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट ओपन करना है तो क्या करूँ? 104 इंटू 1 एंड 104 इंटू दिस, एंड देन 112 इंटू दिस एंड 112 इंटू दैट. तो अभी क्या होगा बोलो मेरे को? 104 प्लस, अतः 104 इंटू 8 कितना होता है? तो इट विल बी 832r ओवर 100. ये समझा क्या? ब्रैकेट ओपन किया. दिस इज इक्वल टू 112 इंटू 1 इज 112 प्लस बोला 672r ओवर 100. अब ये r वाली टर्म को एक बाजू करो एंड इस कांस्टेंट टर्म को एक बाजू कलेक्ट करो. तो फिर क्या होगा बोलो मेरे को? 832r ओवर 100 माइनस 672r ओवर 100 शुड बी इक्वल टू व्हाट? 112 माइनस 104. तो अभी मेरे को बोलो कि ये तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर को जस्ट डिफरेंस ले सकते हो. तो हाउ मच इज द डिफरेंस? 832 माइनस 632, व्हाट इज दैट? 672, 160. So 160r over 100, that is equal to 8. So r will be equal to 8 into 100 and that divided by 160. तो फिर करो ये कितना आता है r. तो ये आया 5%. आया क्या तुमको? समझा क्या r कैसे निकाला? अभी ये r की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालेंगे तो पीस मिल सकता है. तो मे बी आई विल कंसिडर द इक्वेशन नंबर 1. व्हाट वाज दैट? What was the first equation? It was 10,400 is equal to P into 1 plus, बोलो 6r upon 100. लेकिन अभी हमारे पास r की वैल्यू मिल गई है, तो क्या करूँ? 10,400 this is equal to बोलो P into 1 plus 6 into 5 and that over. तो 10,400 इज इक्वल टू बोलो P इंटू, अभी ये थोड़ा सा डायरेक्ट आना चाहिए. 6 इंटू 5 30 अपॉन 100 एंड दैट प्लस 1 1.3. समझा ना? हाँ, तो दिस विल लाइक 1.3. अभी ये 1.3 को नीचे लाओ तो हो गया. देयरफॉर 10,400 डिवाइडेड बाय 1.3 विल बी द वैल्यू ऑफ P. तो P कितना आया? हाँ, तो 8,000 इज द प्रिंसिपल वैल्यू. समझा क्या तुमको? अभी विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन करने की कोशिश करो. हाँ, बीच में कुछ नहीं समझा तो फिर देखो. और घर को जाने के बाद, हियर ऑनर्स कीप दिस थिंग इन द माइंड, घर को जाने के बाद दोबारा रिवीजन करो. सेम क्वेश्चन सॉल्व करो. यू डोंट हैव टू सी द डिफरेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू डू द सेम क्वेश्चंस बट अगेन एंड अगेन.
समझा? समझा करो। हो गया क्या? तुम कहाँ?
हो गया क्या? इज दैट ओवर? फैंटास्टिक. अभी एक काम करना है. अनफॉर्चुनेटली वी कुड स्टार्ट लिटिल लेट टुडे. लिटिल मीन्स हाफ ऑफ द टाइम लेट टुडे, बट दैट्स ओके. जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया है वो विदाउट लुकिंग एट द मॉड्यूल यू हैव टू सॉल्व इट अगेन ऑन योर ओन. करेंगे विदाउट फॉरगेटिंग. मैंने आपको पहले दिन क्या बोला था? स्टे कंटिन्यूअस, हाई द 100% अटेंडेंस एंड देन योर सक्सेस विल बी श्योर. समझा? तो ये फॉलो करो कि जो भी 5-6 क्वेश्चंस आज हमने किया है उसको दोबारा सॉल्व करो. समझा? राइट, वी स्टॉप.